Welcome all, welcome all. Hello. Wait, beta, wait. You're all welcome, beta. You're all welcome. So now we are in lecture number 6, beta, of numerical methods. And today we will discuss first part of numerical integration. आज हम लोग numerical integration start करेंगे and this chapter will be completed in 2 lectures. Okay. Very happy good evening, beta. Mukul, Shajid. Hello, beta. Rishikesh, very happy good evening. Welcome all. Welcome, beta. Today you all will enjoy a lot, beta. आज बहुत मजा आने वाला है. We will start from basics. As you all know, in GATE examination, in last 5 year का ही पेपर अगर आप उठा के देखते हो, so from chapter, this sub chapter, they asked questions from basics too. ओके यानी कि इनमें बेसिक्स को भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा. ओके सो नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट एनी डिले. हम लोग प्रॉब्लम 5 का आंसर बताओ बेटा. फॉर एनी प्रीवियस लेक्चर आंसर आस्क मी ऑन व्हाट्सअप बेटा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता प्रॉब्लम 5 कौन सा था. आई डिडंट रिमेंबर बेटा. शाजद, आप कौन से प्रॉब्लम 5 की बात कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड हुए, कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े. तो आप व्हाट्सएप पे वो प्रॉब्लम को भेज के एंड देन आस्क मी देयर फॉर आंसर. ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम यूट्यूब पे देना भूल जाते हैं और एनीवेयर, देन व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर बेटा 9451707049. ओके बेटा. लाइव लेक्चर में बेटा शाजिद, आई डिडंट रिमेंबर बेटा. रुक जाओ, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं. शाजिद, वेट. SAZID, शाजिद. बेटा आई टोल्ड यू, रात में डिटेल में चेक कर देंगे. हमने आपको ये मैसेज किया है. आपने कुछ सॉल्यूशन भेजा है अपने पेज पे करके, हमने कहा रात में सोते समय आपका सॉल्यूशन हम चेक कर देंगे. ओके बेटा, सो वेट, उसके लिए वेट करिए. अभी लेक्चर एंड होगा, फिर हम फ्री रहेंगे. ओके, देन आई विल टेल यू ऑन व्हाट्सअप. आपका आंसर हम चेक कर देंगे जो आपने लगा के हमें सेंड किया है. डोंट वरी बेटा. ओके. So today we are going to start with numerical integration. As all you know, this is Gaurav Srivastav Sir, Educator Head, Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute with 11 plus years of teaching experience. And this chapter is very very important for your Gate examination, beta. This chapter is very very important. Most important topic. Most important topic. Numerical integration. Okay. In this sub chapter, main topics that we are going to discuss in 2 lectures are Newton-Cotes quadrature formula, just formula needed. We are not going to derive Newton-Cotes quadrature formula because in derivation, interpolation are there. And you know interpolation, extrapolation present in your BTech syllabus but not present in your GATE syllabus. So I'm not going to discuss its derivation. But the formula is important for your GATE examination. They can ask you problems. How? I will tell you. Then main topic, trapezoidal rule, followed by Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule, and finally tomorrow, volume of solid made by revolving area. This is very important, and new questions can be asked in this year GATE examination from this topic directly बेटा. तो ये बहुत ही ज़्यादा important है. 5th number 2. Okay, a very happy good evening बेटा शैलेश. So now Newton-Cotes quadrature formula. You all know बेटा, numerical integration chapter tells us that if we have any graph
like this, then how to calculate area under this curve? Okay, so this is your x-axis, and here on y-axis function of x is there. Okay, Newton and Cotes, these are two scientists, two mathematicians, Isaac Newton and Roger Cotes. Okay, they told us that we can divide curve into n number of subintervals, into n number of subintervals. Okay, like this is x naught, then this is x1, and according to uh, wait, first mention all, and here last one is x1. Okay, so this is subintervals, and these all subintervals are of equal width. ये सारे के सारे subintervals बेटा equal width के होते हैं. These all are of equal width, and it is given by h, represented by h. Okay, and corresponding to this x naught, this is known as y naught, next one y1, next one y2, and so on, last one yn. How to get this x1? 100% x1 can be written as x naught plus h. Similarly, you can write x2. X2 will be x naught plus 2h. Similarly, you can write x3. X3 will be x naught plus 3h. Similarly, if you want to write xn, then xn will be x naught plus nh. Okay, and Newton-Cotes, they derive a beautiful formula. They derived a beautiful formula with the help of Newton-Gregory forward interpolation, and I am directly giving you that formula. That formula was I equals to, wait, I am writing here, I equals to nh y naught plus h/2. अभी बताते बेटा इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, डोंट वरी. ओके, प्लस n 2n-3. इसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड प्लस n-2 स्क्वायर del cube y naught upon 24, and so on, plus dot 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 dot. This formula is known as Newton-Cotes quadrature formula, given by two person. One is Isaac Newton and second one Roger Cotes. Okay, and no need to remember this formula. इसे याद करने की requirement बिल्कुल नहीं बेटा. No need to remember this formula. Okay, I will tell you कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं. So the first question they can ask you, what are the basics from which we are going to derive, we can derive Simpson's rules or trapezoidal rule. Then that formula is Newton-Cotes quadrature formula. सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, don't worry. Okay, now if you are going to put n equals to 1 in this Newton-Cotes quadrature formula, then you can derive with a trapezoidal rule. Trapezoidal formula, trapezoidal rule to obtain integration value. But if you are going to put n equals to 2, then you will obtain Simpson's 1/3 rule. If you are going to put n equals to 3, then you will get Simpson's 3/8 rule. Okay, here if you are going to put n equals to 4, if you are going to put n equals to 4, then you will get Boole's rule. But this Boole rule is not present in your syllabus. Okay, so in this lecture series
you will see these three: trapezoidal rule followed by Simpson's 1/3 rule and followed by Simpson's 3/8 rule. Without any delay, पे अटेंशन हियर बेटा, ट्रेपेजॉइडल रूल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि इसके बेसिक्स से, ग्राफ्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 5 ईयर अगर आप देखो पैटर्न उनका, तो वो अंदर बेसिक से ही घुस के पूछना पसंद कर रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटा छोटा डेरिवेशन, ये पार्ट जो भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ही आसान है। सी हियर बेटा, सो दिस ट्रेपेजॉइडल रूल, सपोज you want to calculate area under this curve. You want to calculate area under this curve. Here this is a y-axis and y is function of x, and here this is your x-axis. Okay, now see, it's very very easy beta. It's very very easy. For a trapezoidal rule, we are going to put n equals to 1, where if this is your equation number 1, so if I am going to put n equals to 1 in equation 1 and taking the curve through x naught, y naught and x1, y1 as a straight line, that is polynomial of first degree. Okay, they can ask you for trapezoidal rule, so you have to tell फर्स्ट डिग्री। कैसे पूछेगा आप बताएंगे, नो नीड टू वरी। नाउ सी हियर, जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव पैरा। सपोज दिस इज योर एक्स नॉट बेटा, ओके, दिस इज योर एक्स नॉट, सो दिस पॉइंट will show you x naught y naught corresponding to this. Here this is your y naught. Okay, now suppose this one your x1 means what beta, x1 means x naught plus h is sub interval, आपने width क्या लिया है, width of interval. Okay, now you can see here, you are going to connect x naught y naught with x1 y1 with a straight line. See beta, this is a straight line. रुको, इस कर्व को थोड़ा और हम बना देते हैं, कर्व भी दिखा देते हैं आपको। वेट बेटा, वेट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज दिस इज your curve where you want to calculate area under this curve. Okay beta, so I am connecting these 2 points, this point and this point, with a straight line. You can see this part missing and this is your error beta. That is why trapezoidal rule will give you error for this function. Okay, because now you get this area, you will get this area. How? It's integration of x naught to x naught plus h of what, किसका इंटीग्रेशन करने वाले हो, your function of x ना, into dx, and it will give you this area beta, this area. Okay, trapezoidal rule will not give you error for 100% cases. In few cases this formula will give you exact answer, and I will tell you
in error analysis of trapezoidal rule, just a 2 or 3 minute topic beta. Okay, so in this way, see, you want n equals to 1 now. I am going to show you. Okay, see here, for n equals to 1, and you are going to take just first two terms here. So n equals to 1, then this one will be only h here. So your integration formula will be here h, and y naught inside this bracket, y naught, and plus h by 2 delta y naught, h by 2. So h is, oh wait, this is your n, not h. Okay, this is your n by 2. Okay, so n here, so n equals to 1, so 1 by 2 and delta y naught, 1 by 2 delta y naught. With the help of forward interpolation, this delta y naught can be written as, this is nothing but y1 minus y naught beta. In this way you can see integration x naught to x naught plus h fx dx can be written as h, and inside this bracket y naught plus y1 minus y naught, and I am going to take LCM 2, so 2 here. Okay, finally you can see integration of x naught to x naught plus h fx dx can be written as h by 2, h by 2, and inside bracket beta 2 y naught minus y naught will give you y naught only. So it's y naught plus y1, y naught plus y1. So this is our equation number 2. सी बेटा, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें. ठीक है, अभी देखना जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा इसमें. यू विल एंजॉय अ लॉट बेटा. एक से रुक जाओ, आई एम रिफ्रेशिंग कमेंट्स, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड बेटा. ओके, Shailesh Kumar sir, is error analysis is in our syllabus beta already asked in previous year examination. कैसे पूछता है, घबराने की जरूरत नहीं है, no need to worry. Error analysis of all three methods will take only 30 seconds. ओके, और उसके तुरंत बाद हम आपको गेट PYQ भी दिखा देंगे एरर एनालिसिस पे कैसे पूछता है. ओके बेटा शैलेश, so no need to worry. To remember error analysis, it will take not 30 seconds, it will take only 10 seconds to remember. ओके, आपको जो हम टेक्निक बताएंगे, ओनली 10 सेकेंड इज मोर देन सफिशियंट. उससे आपके 3 फॉर्मूलाज आर देयर, सो 3 क्वेश्चंस कैन आस्क इन योर एग्जामिनेशन, ओनली 3 क्वेश्चंस. ओके, नाउ सी हियर. सिमिलरली बेटा, सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू टेक another interval of same width, in this case this is my straight line. So this is our x2, and x2 is what? x2 is x naught plus 2h, x naught plus 2h, and here again a straight line. Not, you will not get same amount of error in each sub interval. You will not get same amount of error in each sub interval. Okay, in and you can also see if you are going to reduce the width of your sub interval. अगर आप यहाँ सब इंटरवल की विड्थ को घटाते जाओ ना, then you can see, अगर यहाँ होता सपोज करो तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आती, फिर दूसरा वाला ये स्ट्रेट लाइन आता, जस्ट इट विल गिव यू एरर. ओके बेटा, सो इफ यू आर गोइंग टू रेड्यूस विड्थ, इफ यू आर गोइंग टू रेड्यूस विड्थ, एरर विल ऑल्सो रेड्यूस. ओके, अगर आप एच को घटाओगे तो एरर भी आपका घटता जाएगा बेटा. ओके, नाउ सी हियर, सी हियर, फॉर नेक्स्ट सब इंटरवल x naught plus h to x naught plus 2h fx dx, and after calculation by in similar manner you will get here h by 2 in place of y naught plus y1, you will get y1 plus y2. This is your equation number 3. Similarly beta, you can calculate for next sub interval, so x naught plus 2h, and here x naught plus 3h. Okay,
बेटा इफ़ यू आर इन वेरी हरी इन दिस चैप्टर ना, तो वही होता है कि एग्जाम में भी देख सकते हो, पिछले 5 साल में सिम्पसन का उठा के देखना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सिंपल इंटीग्रेशन वाले टर्म्स ही नहीं आते, इससे कुछ अंदर से भी पूछता है। दैट इज वाई इसमें बहुत हरी की जरूरत नहीं, 1 घंटे में हम सब खत्म कर देंगे, नो नीड टू वरी बेटा। सी हियर, ओके। तो एफ एक्स डी एक्स हियर you will get h by 2, and now y2 plus y3, okay, this is your equation number 4 and so on। ऐसे आपके ढेर सारे इक्वेशन आते जाएंगे and so on and so on, okay beta। now if you are going to add these all, if you are going to add these all, adding wait, I need more slides, okay, see, if I am going to adding all equations, adding all equations, you will get integration, you know now, if you are going to integrate a to b plus b to c plus c to d, then it can be written as integration a to d if all three terms having same fx, okay। so here you can see same fx, same fx, same fx everywhere, so it can be written as x naught to x naught plus n h fx dx, that is area under curve, and you will get here h by 2। now you can see here beta, only one time y naught is there, but y1 you can see 1 and 2 times y1, similarly you can see y2 2 times y2, similarly you will get y3 2 times, y4 2 times, everything 2 times except yn, you will get yn only 1 times, okay। so here you can write y naught plus yn, and everything 2 times, that means 2 times of y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 yn minus 1। so this is your final formula beta, this is your final formula of trapezoidal rule। इन सबको अप्लाई भी करेंगे, नो नीड टू वरी बेटा, वी विल अप्लाई दीज ऑल, ओके। न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, होमवर्क भी लेंगे, okay। so this is our final formula, and you can remember, you can remember, okay, you can remember this formula, this is trapezoidal rule, trapezoidal rule। why it is known as trapezoidal rule beta? because trapezoid, what is trapezoid? Trapezoid means shape in which two parallel lines are there, any quadrilateral shape with at least one pair of parallel sides, at least one pair of parallel sides, so you can see in this case quadrilateral, and this one is not parallel, but this one is parallel to this one, so this is a trapezoid shape, that is why it is known as trapezoidal rule, okay। now one more thing beta, error analysis, very easy, it's very easy, okay। इस पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इन गेट, बट छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता है, okay। so I'm not going to derive formula for error analysis, okay। according to trapezoidal rule, if you are going to check error, if you are going to check error, then absolute value of error can be given as absolute value of error can be written as E, capital E, equals to B minus A whole cube upon 12 n square, maximum of
zeta is an element of a and b, दैट मीन्स जीटा की वैल्यू ए और बी के बीच में वैरी करेगी, एफ डबल डैश zeta mod. Now what is meaning of this formula? बिल्कुल भी घबराना नहीं बेटा, नो नीड टू वरी. हमने कहा ना 10 सेकेंड में तीनों के याद कराएंगे आपको. नाउ सी हियर बेटा, इट्स वेरी वेरी इजी. इट्स वेरी वेरी इजी. द मेन पार्ट of this formula is this one. No need to remember full formula. Okay, max of zeta, the value of zeta is between a and b. A and b is what? This is your a and this is your b. Okay, total width. Okay, now what is f double dash zeta? You will get y naught, you will get y1 equation, you can obtain y2 and so on in this manner. So differentiate two times this y naught, then you will get y naught double dash. Differentiate two times this y1. Now differentiate this one also two times, every y3 y4 y5 and so on. Differentiate each term two times. सभी को दो दो बार differentiate करेंगे. After that differentiation, the term who will show you maximum value put here. Put here. Now ये तो छोटी सी बात हो गई, ये भी नहीं करना है. You need not to remember this one too, because एरर के अंदर में पूरा डेरिवेशन वाला वो आपसे नहीं पूछा जाएगा. पूछा क्या जाएगा? Now the question is, listen carefully. They will ask you, if we have a beautiful function, beautiful हमने लगा दिया, वो नहीं लिखेंगे. Okay, so if we have a beautiful function fx, a polynomial, then for what degree trapezoidal rule will give you exact answer without any error? Can you tell me बेटा? क्वेश्चन समझ में आया आपको कि ट्रेपेजॉइडल रूल में अगर हम fx एक पॉलिनोमियल को लेते हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ कोई खतरनाक ट्रांसेंडेंटल टाइप के इक्वेशन की बातें नहीं हो रही, बिकॉज ई टू द पावर एक्स हो या साइन एक्स हो, ये कभी खत्म नहीं होंगे. जितने बार भी डिफ्रेंशिएट कर लो, इनफाइनाइट बार भी कर लोगे, देन तब भी वो पड़ा रहेगा ई पे एक्स का ई पे एक्स, और साइन कॉस ये चलता रहेगा. साइन से कॉस, कॉस से माइनस साइन, साइन से कॉस, ऐसे चलता रहेगा आपका. ओके, सो इफ वी हैव a polynomial like this, a x plus b, and I want to know if this is my fx beta, then it will give me any error or not if I'm going to calculate area under curve for this one. See here, its first derivative, that is f dash, will be a. Its second derivative 0. If this is a 0, that means y naught, y1, y2 is not required. It's already 0. It's already 0. Then absolute value of error is 0. Similarly 0 degree. So only a f dash itself 0. कोई मतलब ही नहीं है. But if ax square plus bx plus c is there beta, then f dash will be 2ax plus b, f double dash will be 2a, and this is not 0. That means one beautiful line I am going to write here बेटा, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा और पूछा हुआ है. हम अभी आपको गेट का ही पीवाईक्यू दिखाएंगे, नो नीड टू वरी. दे आस्क्ड फॉर सिम्पसन रूल. अब ये सिम्पसन रूल का यू कैन सी हियर, कहाँ गया ये सिम्पसन रूल फॉर इंटीग्रेशन गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट in mechanical engineering 1993, और भी कई बार पूछा है. ओके, सो सिम्पसन रूल फॉर इंटीग्रेशन गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू. अभी इसका आप नहीं बता पाओगे ना, देखो कितना कठिन लग रहा है. यू डोंट नो, एरर एनालिसिस के बाद फटाक से बताओगे. सिमिलरली दे कैन आस्क दिस फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल. सो इफ दे आर गोइंग टू आस्क फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल, देन सी हियर बेटा, नोट. सो ट्रेपेजॉइडल rule will give us
exact answer exact answer of integration if fx is a polynomial of degree less than equal to 1. Is that crystal clear to all of you, beta? So if this one problem and they will write here trapezoidal instead of this Simpson, then degree less than or equal to 1. Option A will correct. Okay, if trapezoidal is here. Okay, that's it. Error analysis is completed. Okay, so this is all about this trapezoidal rule. I hope each and every student enjoyed a lot. Okay, so without any delay, beta, I am going to start Simpson's one third rule. Okay, the scientist name is Simpson, beta. Here, the name of scientist. Here, the name of scientist is Simpson. Okay, Thomas Simpson, 1710 to 1761. Thomas Simpson. That is why it is called as Simpson's rule. Okay, given by Thomas Simpson. Now, see, beta. This Simpson's one third rule is known as Simpson's rule only two. इसे हम केवल सिम्पसन रूल के नाम से भी जानते हैं. दैट मीन्स अगर कहीं सिम्पसन रूल केवल लिखा मिले देन जस्ट solve that problem only by one third rule, and you can't raise hand if you are going to solve that by 3/8 rule, because ये हिस्ट्री है इसकी. सिम्पसन रूल वन थर्ड को ही कहते हैं, वन थर्ड का दूसरा नाम है. और ये जो आप देख रहे हो सिम्पसन्स 3/8 रूल, इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्पसन्स सेकेंड रूल. It is also known as Simpson's second rule. So if they ask you that solve this problem by Simpson's rule, then apply one third only, beta. Okay, I hope you all get this concept. Now see here, beta. Now if I am going to put n equals to 2, I am going to put n equals to 2 in equation 1. Okay, in equation 1, and taking curve from or through, taking curve through. एक मिनट बेटा, ये मेरे मोबाइल में क्या प्रोसेसिंग दे रहा है? लाइव तो है ना हम? ओके, आई एम लाइव. x नॉट, y नॉट, x1, y1 and x2, y2. oh sorry, okay, यहाँ लिख देते हैं. Okay, and 3 point means what? That is a polynomial of degree 2 और सेकेंड डिग्री. इसका फिजिकल मीनिंग आपको समझाते हैं. नो नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू शो इट्स फिजिकल मीनिंग बेटा. सपोज दिस इज योर कर्व बेटा, दिस इज योर कर्व. Okay, this is your curve and you want to calculate this time the value of integration, that is the value of fx, by using Simpson's one third rule. In a trapezoidal rule, the minimum points you need was 2 only, but here in this case the minimum points you need is not 2, it's 3 now. It's 3 now. This is your x naught, this is your x naught plus h, this is your x naught plus 2h, or you can write this as x1 and this one as x2. Corresponding to this will give you y naught, this will give you y1, this will give you y2. Second degree polynomial in a Simpson's one third rule, what does it mean? Suppose your actual, I am showing you here, see here,
your actual was looking like this. This was your actual, beta. This was your actual. But now you are going to calculate area for this one. कलर चेंज कर दें, अभी समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी. देखो ध्यान से देखो, this one. Okay, so this one our actual one and this one was our px, like in previous case, this was your px and this was your fx. Okay, ये कैसे मिलता है? It is related directly with parabola. Like this is one parabola, this is second, and third one like this. So the main curve whose under area you are going to calculate is this one. See, this one. Okay, so this is Simpson's 1/3 rule, beta. This is Simpson's 1/3 rule. Okay, in similar manner you can derive formula for this one too, but I'm not going to derive because that was not important for your examination. So finally, after solving, you will get, अब इसके बारे में एक बात और आपको बताते हैं, वेट, ये लाइन पहले लिख लें आप लोग बेटा. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फॉर लिमिट्स x naught to x naught plus nh fx dx. Okay, and that becomes equals to h by 3 here y naught plus yn. Okay, y naught plus yn plus 4 times y1 plus y3 plus y5 plus dot 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 dot, and plus here 2 times all odd y, that means y2 y4 y6 and so on beta. So this is your final formula of Simpson's 1/3 rule. Okay, this is final formula of Simpson's 1/3 rule. Now one more thing beta, one very 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 important note I am going to write here. In Simpson's 1/3 rule beta, in Simpson's 1/3 rule, you can see the integration which you are going to calculate is running like pairs of subintervals. In pairs of subintervals, that means always subintervals will be in pair. मतलब ऐसा आप मानो यच कि आपको जो सब इंटरवल मिले वो पेयर में मिले. ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ एच की वैल्यू ले लो जिससे आपके 7 सब इंटरवल आ गया, तो 7 सब इंटरवल आ गया तो आप सिम्पसन 1/3 को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे. ओके, सो सिम्पसन 1/3 के लिए आपको कितने नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए? जितने भी हो सब पेयर्स में चाहिए. ओके, सो इस लाइन को लिख लें बेटा आप लोग. इन सिम्पसन्स 1/3 रूल, इन सिम्पसन्स 1/3 rule, the given interval, beta, if you feel any difficulty, feel free to ask me. Okay, in Simpson's 1/3 rule, the given interval must be divided into even number of equal sub intervals, since we find area of two strips एट अ टाइम, क्योंकि आप एक टाइम में 2 स्ट्रिप्स के एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए. ओके बेटा, सो दिस इज योर सिम्पसन्स 1/3 रूल. सिम्पसन्स 1/3 रूल.
Now, error analysis for this one. Error analysis for Simpson's rule. Error absolute value. Absolute value. Okay. So it can be written as s to the power 4 by 180 b minus a maximum of zeta between a, b and maximum of f. This is not 4. This is not power beta. This is not power. This shows us fourth derivative. F to the power 4 here shows us fourth derivative. This is what? This is fourth derivative. Fourth derivative. Okay, this is fourth derivative. In similar manner as we had seen in case of trapezoidal rule. Okay, beta. Now see here. If we have a function like this, then here f dash itself 0. But if our function will be like this, then f dash is a, but f double dash is 0. But if our function will be of second degree like ax square plus bx plus c, then f dash ax 2ax plus b, f double dash will be 2a and f triple dash will be only triple dash will be 0. If f dash is 0, that means f4 will also 0. If f double dash is 0, f triple dash, f4 dash, everything is will be 0. And f3 dash will be 0, then f4 will be also 0 here. And if your formula polynomial looks like ax cube plus bx square plus cx plus t, then in this case beta, f dash not equal to 0, double dash not equal to 0, triple dash not equal to 0, f to the power 4 dash in 1 dash 3x square, second dash x square will be now x only, 3 times dash it's a constant term, but 4 times dash you will get 0 here. That means in case of Simpson rule, if you have a polynomial, if your fx is a polynomial, if your fx is a polynomial of degree of degree 3 or less than 3, degree किसे कहते हैं बेटा? Highest power of x in any polynomial equation. Highest power of x is known as degree of that equation. So if degree is less than, if here polynomial fx, polynomial fx, if polynomial fx degree is less than equal to 3, then it will give exact answer without any error. Without any error. Okay, beta? Is it crystal clear to all of you? Is it crystal clear? बोलो भाई थोड़ा जोश वोश दिखाओ. Everyone, is it crystal clear, beta? Now you can see Simpson rule for integration gives exact result when fx is a polynomial function of degree less than or equal to 3. It's 3. Okay, beta? Clear है सभी को? It's very easy ना? Now see last one, Simpson's 3 by 8 rule, beta. In Simpson's 3 by 8 rule, beta, we are going to taking a strip at a time 3. We are going to take 3 strips at a time. We are going to take 3 strips at a time. Okay. That means we need at least 4 points. Minimum number of points will be 4. x0, x1, x2, x3. So this is y0, this is y1, this is y2, this is y3. Okay, so we are going to take 3 sub-intervals as a strip at a time. Okay, beta? Now,
After deriving, here you are going to put n equals to 3, okay, in equation 1. So what will we get? It will give us, it will give us one more beautiful formula. I am writing on this page. See beta, this formula is integration x naught to x naught plus nh fx dx equals to fx dx equals to 3 by 8 rule. इसे क्यों कहते हैं? Because here after solving you will get 3 by 8, okay, and y naught plus yn plus 3, and with 3 no terms of y having multiples of 3. That means y3, y6, y9, y12, everything will be missed in this bracket. So y1 will be there, y2 will be there, now y4 will be there, y5 will be there, y7 will be there, y8 will be there, and so on. Okay, and all three multiplied by 2, not 3. So here y3, y6, y9, and so on, जितने भी terms हो. So this is beautiful formula of Simpson's 3 by 8 rule. Okay, so I hope कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी. Okay, एक छोटे सा और काम कर लेते हैं. इसके लिए भी एरर के एनालिसिस कर लेते हैं एंड फटाफट हम लोग न्यूमेरिकल और फॉलोड बाय होमवर्क पे चलते हैं. और कल इस पे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आपको क्वेश्चन लगवाने वाले हैं. वो अगर नहीं लगाओगे तब भी इस पे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, बिकॉज समटाइम्स इन योर एग्जामिनेशन दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू डायरेक्टली, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एफ एक्स डायरेक्टली. You have to create what is fx, you have to find what is fx. Okay, and that will be discussed in tomorrow's lecture. Not tomorrow, next lecture will be not on Sunday, it will be on one day after tomorrow, that means on Monday. Okay, and also I will tell you how to get volume of solids that we get by revolving area. बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चन है, बहुत आसान है. ओके, नाउ सी हियर बेटा, one beautiful note here to in Simpson's 3 by 8 rule, in Simpson's 3 by 8 rule, the number of intervals must be divided into multiples of, पिछला वाला था multiples of 2, तो इधर हो जाएगा multiples of 3 sub intervals. Okay, and the last term here, error analysis. So errors absolute value, so it can be obtained by using this beautiful formula, x to the power 4 by 80 b minus a, and maximum value of zeta between a and b f4 zeta. Now you can see here too beta, that means no need to worry, the result, final result you will get same to same as in case of Simpson's 1/3 rule. यानी कि ये भी आपको exact value कब देगा, when your fx is a polynomial functions of degree less than or equal to 3. Okay beta, now without any delay I am proceeding to beautiful numerical. So this is numerical number 34 of numerical methods chapter, and this is first numerical, or you can say second numerical, because first one is this one, first one from gate mechanical in 1993. So this is my first numerical, a second numerical of numerical integration chapter. Okay, evaluate the integral of 0 to 6 dx upon 1 plus x square with 6 subintervals by using Trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3 by 8 rule. Also compute the error with exact value. यहाँ वो एरर की बातें नहीं पूछ रहा, ये डायरेक्ट आप बता सकते हो विथ एग्जैक्ट वैल्यू.
Also compute the error with exact value. So you have to calculate this by using simple integration method like 1 upon 1 plus x square. Integration will give you tan inverse x. Put limit. So tan inverse 6 minus tan inverse 0, and then you will get your final answer. That will be your exact answer. So finally you have to compare with exact answer. So I'm going to solve. See here, it's very easy, beta. It's very easy. So he want 6 sub intervals. So I can take h as 1. So 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. Okay, I can take 6 sub intervals. That means h can be calculated as b minus a by 6. This 6 is what? This 6 is number of sub intervals, not number of points, beta. Not number of points. Here you will get 7 number of points. बिकॉज वन सब इंटरवल यू नीड टू नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक सब इंटरवल के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 सब इंटरवल के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं. सो फॉर सिक्स सब इंटरवल्स यू विल नीड 7 points. Okay, now here see, b is 6, a is 0 by 6. You can calculate directly or by your common sense too. आपसे कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे. ओके, सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एल्गोरिथम टाइप का कुछ बना दिया जाए. वेट इंसर्ट. सो 1 2 3 4 5 6 7. okay, so it's 7. Okay, so this one, what, this one is our x, and this is the value of x, 0 1 2 3 4 5, and this one 6. Okay, and here in denominator our fx is there. What is our fx, beta? fx is 1 upon 1 plus x square. So इसे calculate करना पड़ेगा 1 by 1. What is this fx? This fx is 1 upon 1 plus x square. This is our fx. Now I am going to put x equals to 0. ध्यान से देखेंगे सभी लोग बेटा. By putting f equals to 0, so 1 upon 1 plus 0, it will give me 1 only. 1 square will give me 1, so 1 upon 1 plus 1, 1 upon 2, that means 0.5. Similarly, you can calculate for 2, 3, 4, 5 and 6. For 2, it will come 0.2. ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बचा लेते हैं. बट बेटा प्लीज़ कैलकुलेट, इसे आप खुद कैलकुलेट करके चेक करना. सो 0.05, 8, 8, 2, 3, and fifth one 0.0385, and sixth one 0.0270, 0.0270. Now how to call them y0, y1, y2, y3, y4, y5? कैसे इनका नामकरण करेंगे? How? See here beta, the first one is our y0, this is our y0, this is our y1, this is our y2, this is our y3, this is our y4, this is our y5, this is our y6. Okay, so now see, number 1, by trapezoidal rule. By trapezoidal rule, it's very easy beta. It's very easy. So we know the formula for trapezoidal rule. So if we want to calculate 0 to 1, 1 upon 1 plus x square dx. So it can be written as h by 2. First term, that was y0, last term, that was y6, and plus twice of all terms except y0 and y6. So y1, y2, y3, y4 plus y5. Okay beta, so just put here values, then you will get answer. h was 1, so 1 by 2. y0 was, आप देख लो यहाँ लिखा है हमारे पास, तो हम स्लाइड बैक नहीं कर रहे. एंड लास्ट वन 0.0270 and plus 2.
and y1 was 0.5, y2 was 0.2, y3 was 0.1, y4 was 0.05, 8, 8, 2, 3, y5 was 0.0385. ओके, नाउ कैलकुलेट आप भी करेंगे, आप करके बताइए, हम भी कर लेते हैं. 0.5 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.05, 8, 823 plus 0.0385, and it's twice plus 1 plus 0.0270 divided by 2. So it's 1.410823. So in your examination, if they are going to ask just up to 3 decimal place, so 411 will be your answer. Okay, 410823. तो अप्रॉक्स किया, 8 को हटा के वहां 1 लिख दिया. Similarly, you can calculate for Simpson's 1/3 rule too. So second one beta, and also here एग्जैक्ट वैल्यू से अभी हम लोग करेंगे कंपेयर. पहले सेकेंड वाला निकाल लेते हैं. सो सिम्पसन्स 1/3 रूल. ओके, हियर 0 to 1 dx upon 1 plus x square. So 1/3, that means here h by 3, and h by 3 y0 plus last one was y6 plus 4 times of all odd terms. So y1, y3, y5, and 2 times of all even terms. So y2 plus y4. Sometimes they are going to write this formula as, इसे कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, this one, like h by 3 and inside bracket x plus 4 odd plus 2 even, where this x shows y0 plus yn, odd shows y1, y3, y5, and even shows y2, y4, y6, and so on. Okay, now here just put them and you will get your final answer. इसे हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही, सो वैल्यू वापस से पुट करके टाइम लॉस नहीं करेंगे. डू योर सेल्फ, इट विल कम 1.3662. ओके, एंड लास्ट वन, Simpson's 3/8 rule. Simpson's 3/8 rule. अगेन फॉर्मूला यहाँ फिर से लिखेंगे बेटा फॉर रिविजन पर्पस. सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 dx upon 1 plus x square, that becomes equals to 3h by 8 and first term and last term. Okay, plus 3 into all terms whose subscript is not multiple of 3. So y1 will be here, y2 will be here, y3 no, y4 will be here, y5 terms over, and plus 2 into only one term, y3. You can calculate this one too. H was 1 by 8 and y0 plus y6. Y0 was how much? Y0 was 1, y6 was 0.0270, and plus 3 times of y1 was 0.5, y2 was 0.2, y4 was, no, sorry, y4 was 0.058823 plus y5 was 0.0385 plus 2 times of y3 was 0.1. okay, after solving this beta you will get, wait, 1.3571. मिला लेना, अगर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो मेक इट करेक्ट. ओके, so this is our final answer for third one. Now what is error here? What is error?
if they are going to ask just error, tell me error with exact value. So first you need to know what is the exact value of this integration. So how to get beta exact value? See here, exact value. So integrate this. After integration 0 to 6 dx by 1 plus x square. After integration you will get tan inverse x, so tan inverse 6 minus tan inverse 0. And after solving, tan inverse 6 tan inverse 0, so it's 1.40565 up to 5 decimal place. So this is our exact value. Now see here error. So how to write this error beta? Error means estimate value minus actual value, mod. That means in your examination always write positive answer. Okay, so estimate minus actual. What was our estimate here? It's 1.41082 up to 5 decimal place. And actual was कहाँ गया भाई? Yeah, 1.405 1.40565. Finally our answer will be 1.41082. बेटा वॉइस मेरी स्लो तो नहीं आ रही? माइक लगा लेंगे कल से अगर स्लो आपको सुनाई दे रही हो तो. It's 0.00517. So this is our error beta. Okay, similarly you can calculate for this one too. So here error will be estimated value 1.3662 and actual was 1.40565. Okay, so here you will get answer 1. Okay, minus 0.03945. Okay beta, so this is our error here. In the third one, error can be written as actual, estimated is this one estimated, and actual was 1.40565. and after solving always use virtual calci only beta, ये हम यूज कर सकते हैं, आप नहीं. So it's 0.048 बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में वर्चुअल कैल्सी पे ही आपको सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. ओके बेटा, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मजा आया सभी को? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? थोड़ा स्लो हो गए तो पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है, अभी थोड़ा तेज बोल लें. ओके वेट, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास लगेगी बेटा, नो नीड टू वरी बिनू भाई. ओके, नो नीड टू वरी. ओके बेटा, वाइड आर्म धनुष. सो ऑल एंजॉयड बेटा? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है. सो आई नीड वन मोर लेक्चर ओनली एंड यू कैन सी जस्ट 1 आवर लेक्चर. 1 घंटे में कितना कुछ हमने आपको पढ़ा दिया एंड आई एम नॉट इन हरी. ओके, आराम से बताया, सब कुछ बताया. ओके, एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल होमवर्क. इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x square dx upon 1 plus x cube. But this one is x cube. This one is x cube. Okay, with 4 sub intervals by using trapezoidal and Simpson's rule. अब यहाँ कल सिम्पसन लिखा है, अब आप सोचो क्या लिखने का है. यहाँ एक आंसर हमने दे दिया है. एक आंसर हमने इसलिए दे दिया है क्योंकि ट्रेपेजॉइडल का तो आपका सही ही आएगा. अब सिम्पसन आप सही लगाते हो कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी योर आंसर एंड दिस विल बी योर एरर. ओके, सो ओनली दिस 2 or you can say 1 problem is your homework. And tomorrow I will discuss more numericals from this numerical integration chapter with one more topic left. Okay, this one topic. This topic, okay, I will discuss tomorrow. Very easy. It will hardly take 5 minutes. Hardly take 5 minutes.
5 मिनट में इसको हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। ओके, सो बेटा आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ब्यूटीफुल कमेंट। कमेंट लिखना भूल जाते हो यार आप लोग, ठीक है? कमेंट लिख दिया करो यार, थोड़ा हम भी आपको मोटिवेट करते हैं, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़े और लेक्चर्स लगाने लगेंगे यूट्यूब के ऊपर में। हाँ, सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एवरी डे बेटा इफ यू वांट beautiful your dream rank in gate. If you want dream rank in gate examination or any examination, so you must revise your notes daily. I must do my revision daily, 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 I must do my revision daily. Okay beta, if you are going to revise your notes every day, then definitely you will get your dream rank. So all the best to all of you beta, and a very happy good night. Take care. किसी कोई डाउट नहीं ना है, आई कैन गो, आई कैन लीव। फाइंड कर दे क्लास बेटा, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर इन टूडेज लेक्चर? होमवर्क की स्क्रीनशॉट ले लेना, ना लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे भी लेक्चर हट नहीं रहा, यूट्यूब पे ही रहेगा। ओके, सी फ्रॉम देयर। ओके बेटा, सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मंडे। ओके, दैट मीन्स वन डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम 9:30 PM। वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा। आज लगेगा नेक्स्ट लेक्चर, आज ही पढ़ा दें बोलो तो आज ही पढ़ा दें लेकिन आज मत पढ़ो, आराम से पढ़ते हैं बेटा। अभी होमवर्क लिया, आराम से देखो। हमने कहा ना, जो चीज़ हम करते हैं कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करते हैं, ठीक है? एक बार पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ टाइम याद रहेगा। आप कभी नहीं भूल सकते हो अब ये सारे रूल। ओके, कि इसमें एक सब इंटरवल लिया, इसमें 2 सब इंटरवल लेके करते थे, इसमें 3, इसलिए इसमें मल्टीपल इवन नंबर्स में लेते थे, सब इंटरवल्स में आप 3 के में लेते थे। एरर कैसे निकालते थे, कब एरर लेस होगा, सब कुछ क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। ओके, सो अभी आज नेक्स्ट लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी वन डे आफ्टर टुमारो, मंडे को हम इसे बाइंड अप कर देंगे, एंड देन नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इस न्यूमेरिकल मेथड्स चैप्टर का लास्ट सब चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ यूलर्स मेथड, रंजाकता मेथड, पिकार्ड्स मेथड। वो भी आपका हार्डली दे टेक टू लेक्चर्स हार्डली। ओके, चलते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे, टेक केयर। वेरी हैप्पी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा। शेयर करना मत भूलना बेटा, शेयर करना मत भूलना एवरीवन। ओके, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं यूट्यूब पे ज़्यादा लेक्चर लगाने के लिए, आपके मोटिवेशन की हमें भी ज़रूरत पड़ती है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं, टेक केयर बेटा।